lovelies, welcome back to my YouTube channel. This is your Naaz Arora. Yes, I'm yours. Okay, I'm super excited. This video is coming after my birthday vlog. So I am 26. Congratulate me. Don't forget to put down happy birthday on this video and congratulate me for turning 26 this year. With today's video, like as requested on my Instagram, all of you wanted to see a haul. So I shopped some stuff from Amazon and I didn't have a good experience. I received broken stuff. I had to buy double the stuff even after they complete the 500 minimum limit, and I am totally disappointed with Amazon. Like, I want to show you guys that Amazon is not as trustworthy as people say it to be. I am just very disappointed from Amazon. ये Bluetooth photo clicker है, आपको पता है by now that I am a blogger. So इसका मेरा ये एक्सपीरियंस था कि मैंने इसको अपने सारे ऑर्डर्स के साथ ऑर्डर किया था, बट एक बार उस भैया ने मुझे कॉल किया, मैं घर नहीं थी, मैंने बोला मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ, उसने मुझे सेकंड कॉल किया सेम डे, वरना 3 अटेम्प्ट्स होते हैं, 3 डिलीवरी अटेम्प्ट्स होते हैं. उसने उसके बाद कॉल ही नहीं किया, उसने अपने आप रिटर्न रिक्वेस्ट भेज दी. तो ये मुझे सेपरेटली ऑर्डर करके इस पर सेपरेटली शिपिंग चार्जेस देने पड़े. आप बिलीव करोगे ये 180 रुपीज़ का प्रोडक्ट है और इस पर मैंने आई थिंक अराउंड 70 रुपीज़ शिपिंग चार्जेस दिए हैं सिर्फ 180 रुपीज़ के इस फोटो क्लिकर के लिए. लुक एट योर कोरियर सर्विस Amazon. Is it worth it? So not first thing happened. Secondly, I ordered these lasagna sheets. This is 235 ka one pack. The bad bit was that you had to order minimum 2 pieces of the package, like 2 packages of lasagna sheets. You cannot order a single lasagna sheet. So even after my order, आप देखो ये plus 2 of these, like this is 235 per lasagna pack. So इसका ऑर्डर ही सरप्लस हो जाता 500 के लिए. सो इवन आफ्टर दैट Amazon was charging me extra delivery charges already. तो मैंने कहा इंस्टेड ऑफ पेइंग डिलीवरी चार्जेस व्हाई डोंट आई शॉप मोर स्टफ जो मुझे चाहिए. मैंने ये वेइंग स्केल ऑर्डर किया. ये फूड वेइंग स्केल है. आजकल मैं थोड़ा शेफ टाइप मोड में हूँ, तो मैं मेजर करके कई बारी खाना, मतलब जैसे हम कुकिंग करते हैं मेजर करके. So I ordered this. This is a good product. Next product that I ordered is this headband. I am sure you've seen it on my Instagram by now. Let me just adjust the camera. Okay. So this looks great. Like this is very high, okay, in general. I never had a headband like that. So मुझे अच्छा लगा. It is a different product. It costed me for 250. वैसे इसकी cost 1000 थी. I loved how the beigeish white color is there because it will work with almost all my attire. So I like it. आप देख रहे हो इसके साथ भी काफ़ी अच्छा लग रहा है. So yeah, I like this product on the whole. This is one of my best buys so far on Amazon. I bought gua sha and देखो मेरा एक gua sha इन्होंने, मेरा रोलर जो है बेसिकली ये इन्होंने टूटा हुआ भेजा. ओके, दिस प्रोडक्ट इज़ वर्थ आई थिंक 500 समथिंग एंड दिस इज़ वर्थ 600 समथिंग. दिस इज़ फॉर योर फेस योगा एंड रोलर. मैं रोज़ रात को आई यूज़ इट फॉर माई स्किन केयर. आई लिंक इन इंस्टाग्राम वीडियो वेर आई हैव डन माई स्किन केयर यूजिंग दीज प्रोडक्ट्स. सो इनको मैंने बोला कि आपने मेरा प्रोडक्ट ये वाला टूटा हुआ भेजा है, तो इन्होंने मेरा रिटर्न ही नहीं लिया. एंड ये नॉन रिटर्नेबल प्रोडक्ट है, अंडरस्टूड. बट अगर मेरे को ब्रांड से प्रोडक्ट टूटा हुआ आया है, सो एम आई सपोज टू यूज दिस. ऐसे होना चाहिए था समवॉट लाइक दिस. ओके, इनको इतनी ईमेल्स डाली. आई एम अ प्राइम मेंबर ऑल्सो, स्टिल no reward. So disappointed in my order. I ordered this Miss Claire nail glue. I wanted nail glue. I had temporary nails, so I ordered this. 180 की order की थी and I paid fucking 250 rupees for it. Like आप बिलीव करोगे मैं 180 ऑर्डर कर रही हूँ और मैंने इन सारे प्रोडक्ट्स के साथ ऑर्डर किया और मैं 250 इसके पे कर रही हूँ. हर प्रोडक्ट के लिए उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज हो जाती है और ऑनलाइन उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस समझ ही नहीं आती. मैंने ये टिंकल रेजर 3 रेजर्स का एक पैक होता है, टिंकल रेजर्स का, मतलब वो मैंने पैक तो फेंक दिया, बट आई ऑर्डर्ड दीज 3
razors, like I to do my brows I use this, and to shave my face. इसका क्वालिटी अच्छा है. इट इज़ प्रिटी मच लाइक अगर आप रेगुलर, जैसे मैं तो हर 4-5 डेज के बाद एक बार ही फेस शेव करती हूँ. सो मेरे को ये पसंद आया. आई गॉट 8 प्रोडक्ट्स, ओके, एंड आई एम सेटिस्फाइड विद ओनली दिस टिंकल रेजर एंड दिस. आउट ऑफ 8 प्रोडक्ट्स आई हैव गिवन शिपिंग ऑन एटलीस्ट 3 प्रोडक्ट्स, जिसमें से एक प्रोडक्ट तो मेरा टूटा हुआ निकला. अब दिस सेट लाइक दीज 2 कॉस्ट मी 1300 और 1200 अराउंड. इन पे थोड़ा डिस्काउंट था बट फिर भी ज़्यादा. Amazon really needs to buckle up their game, okay? And मैं तो सोच चुकी हूँ कि आई एम नॉट गोइंग टू शॉप फ्रॉम Amazon anymore. It is too much. Like I'm really disappointed in the brand, the way they have turned out with their products. It's just pathetic, okay? So that's it. I am not really satisfied from my Amazon haul. Okay guys, that's it for today's haul. I hope you guys enjoyed this video. I have given बहुत ही ज़्यादा एक honest review on Amazon, my experience on Amazon. Like I'm receiving broken products, I'm paying extra shipping, still not satisfied with the brand's quality and everything. So yeah, I am very, very disappointed, and they didn't respond to my mails at the last point. Whole haul is worth like 3,000-4,000 rupees, right? Other countries, people are big fan of Amazon. I don't think they have the same quality or the same level of working here in India. So I am pretty disappointed in the brand, and right now at least I'm not recommending it to people. You guys wanted to see it, you say, I deliver. That's how it works. Okay, so guys, thank you so much for loving my previous video. It's like the response has been crazy. Girls have been commenting on the video that we loved your makeup tutorial with using just lipsticks. So yeah, if you haven't watched it, watch it. The link is in the description below. So yeah, that's it. See you soon. Mwah. And don't forget to subscribe, like, share, comment. Love you all.